Yes, Vita. Good morning, students. Today we are going to discuss the in-text question. Open page number 134 of your book. In-text question. In-text question. In-text questions. Satvir sir. Yes, sir. बोर्ड पढ़ा जा रहा है? हाँ जी सर. ओके सर, थैंक यू. वेट, नहीं सर, नहीं पढ़ा जा रहा है सर, नहीं पढ़ा जा रहा है? नहीं सर, ब्लर सा आ रहा है. ओके जी सर. हाँ जी, साफ हूं नहीं सर. हूं हाँ जी सर. अब नहीं सर, अभी भी नहीं सर, मेरे को लग रहा है इंटरनेट की प्रॉब्लम सर. अभी भी नहीं, साफ नहीं है सर. लाइट ऑफ करो कुछ. नाउ धुंधला सर आ रहा है बोर्ड. नाउ वेट सर, वेट सर, थोड़ा. ओके सर. इंडेक्स क्वेश्चन बेटे. यस, पेज नंबर 134. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. So we have done it, and according to the universal law of gravitation, there is a force of attraction. Okay, and the what universal law of gravitation is F is equal to what? G into M1 into what? M2 upon R square or D square. Okay, in some books it is written R square, or in some books it is R D square. Okay, or you can say G M1 M2 upon D square. You can write R dx y z anything. Okay. ओके, कई बच्चे ना इसको 2 को नीचे लिखते हैं, वो गलत है. ओके, हाँ, आर स्क्वायर है. ओके, हाँ. सो देयरफॉर दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हाट इट स्टेट्स दैट देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies, and the force is directly proportional to the product of the masses of the bodies and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Okay. Second question bete, write the formulae to find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of earth. So beta, here is what, like this is earth. You can say it is earth. Here is the center of earth, and here is an object on the surface of earth. Here is the center of that object, and the distance between their centers is that what? D. Let the distance between their centers is what? D. And if the radius of earth is R, then we can say D is nearly equal to what? R. Because on the surface of earth सबसे बड़ी बॉडी क्या है? हिमालय, एवरेस्ट. और एवरेस्ट की हाइट कितनी है? अबाउट 10 किलोमीटर. तो 10 किलोमीटर हाइट है, तो उसका जो सेंटर होगा 5 किलोमीटर पे होगा ना. तो अर्थ की रेडियस जो है दैट इज अबाउट 6400 किलोमीटर. तो 6400 किलोमीटर अगर 5 यूनिट दे तो ऑलमोस्ट कितना हो गया? सेम रह गया. So therefore this is the formula. F is equal to what? This is mass of earth and this is the mass of object. Mass of earth and mass of object. Yes, question number 3rd on page number 136, and question number 3rd is what is meant by free fall. तो हमें कल या परसों किया था ना, free fall when a body falls vertically downwards under the action of gravity only. Under the action of gravity only. जैसे मान लो बेटे, ठीक है, ये देखो आज जो है, ठीक है, आज चौक जो है, ठीक है, नीचे गिर रही है. तो जब ये नीचे गिरेगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इसके ऊपर ओनली ग्रेविटी की फोर्स काम करेगी. दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल. दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? The acceleration of a body due to the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity, and the value of acceleration due to gravity is written by small g, and its value is 9.8 meter per second square. Its value is what? 9.8 meter per second square. Okay, next is question number 5. What is the difference on page number 138?
What is the difference between the mass of an object and its weight? I think we have discussed it yesterday, na, or day before yesterday. So there were, I think, 7 or 8 points of difference. Mass is what? It is the quantity of matter of a body, of quantity of substance contained in a body, and weight is the force by which the body is attracted by the earth toward its center. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. The unit of mass is what? Kilogram, and CGS unit is what? Gram, and the unit of weight is what? Newton, and CGS unit is what? Diameter. Mass is a constant quantity, okay, and it is always greater than 0 or always positive. But weight being a vector, it may be negative, positive, or 0. Weight of a body is 0 at the center of Earth. Mass is not affected by the it is not affected by the presence of other bodies, whereas weight is affected. Okay, okay. Weight of a body is what? Different on different places. The weight of a body on poles is greater than the weight of that body at equator. Okay, Anji. Yes, today mass is a fundamental quantity and weight is derived quantity. Okay. Yes. Next, why is the weight of an object on the moon of 1/6 its weight on the earth? Because, write down, because the value of acceleration due to gravity on the surface of moon, Em, is equal to acceleration due to gravity on earth divided by 6. Okay, is equal to what? Value of acceleration due to gravity on earth, that is equal to 9.8 divided by 6, and it is equal to about 1.6 meter per second square. 1.6 meter per second square. Next, beta. Yes, you open your exercise, page number 143. Page number 143. Yes. Exercise. Question number 1. What is question number 1? How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? Yes, we know F is equal to capital G, mass of first object into mass of second object into square of the distance between their center. Okay. Now he is saying that mass of the bodies is not changed, is not altered, but the distance between the bodies half. जब distance half हो जाएगा तो force change हो जाएगी. So left it is called what? F dash. It is equal to what? G into what? M1 into what? M2 divided by R की जगह क्या आ जाएगा बेटा force? R/2 whole square. Okay. So therefore, it is equal to what? It is equal to G into what? M1 into M2 divided by what? R square divided by 4. 4 ऊपर चला जाएगा ना? Okay. R square divided by 2 का square कितना होगा? 4 ऊपर चला जाएगा. So therefore, new force हमारे पास आएगी, that is equal to 4 into G into M1 into what? M2 upon R square. तो ये जो टर्म ब्रैकेट में लिखी है किसके बराबर है? तो पहले फोर्स है ना. So therefore new force F dash is equal to 4 times of previous force. Okay. So therefore if the distance between the centers of the bodies is reduced to half, then the gravitational force of attraction between the bodies that increases by what amount? 4 times. Okay. डार्क आपको दिख रहा है? अब दिखेगा. ओके. यस बेटा. क्वेश्चन नंबर 2. Gravitational force acts on all objects in proportion
to their masses, why then a heavy object does not fall faster than a light object? Okay, okay. So beta we write down. Write down the answer. The speed of fall of the body depends on the acceleration of the body depends upon the acceleration according to second law of motion. According to second law of motion, acceleration is equal to net force of the body, and net force of the body divided by mass. Because law क्या है? Force is equal to what? Net force is equal to mass into acceleration. तो acceleration is equal to mass नीचे आ जाएगा ना? Okay, okay. So net force when a body falls freely, okay, then acceleration is equal to what? Net force कितनी होती है? mg. Weight of the body. जब बॉडी फ्रीली फॉल करेगी तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी? कितनी फोर्स है अर्थ उसको खींचेगी, वही तो उसका वेट है ना. दैट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय m. तो m से क्या हो गया? कैंसल. सो इट इज इक्वल टू व्हाट? g. ओके, लिसन. अब नाउ यू आर हैविंग टू बॉडीज लेफ्ट. इट इज ऑफ 10 kg एंड इट इज ऑफ 1 kg. तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ 10 kg कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10 into g अपॉन 10. 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल. एक्सेलरेशन ऑफ वन बॉडी की कितनी आएगी? इसकी बोल शाबाश. दैट इज इक्वल टू मास इज मास इनटू जी अपॉन मास है. 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए जी है ना. सो देयरफॉर अगर हम दो बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस को क्या करें? बोलो शाबाश. एक हाइट से छोड़े, ओके, बिल्डिंग के ऊपर टॉप से अगर इकट्ठा छोड़े एट ए टाइम, एक 10 kg की और एक 1 kg की, ओके, तो दोनों bodies they will reach the earth at the same time because acceleration due to gravity is same. Okay, it is independent of what? Mass. Write down acceleration due to gravity during free fall. Acceleration due to gravity during free fall is independent of mass of the bodies. Mass of the bodies. Okay, therefore bodies of different masses, reach the earth at the same time. When drawn from same height at same time. Question number 3 beta. What is the magnitude of the gravitational force between earth and a 1 kilogram object on its surface? Mass of earth is given and radius of earth is also given. So we know mass of earth is given, that is equal to 6.0 into 10 raised to power 24 kilogram. Mass of the body is equal to what? Your object is equal to what? 1 kg. Radius of earth we know, that is equal to 6.4 into 10 raised to power 6 meter. Therefore, what will be the force between them? That is equal to capital G into mass of earth into mass of object divided by square of the radius of earth. Square of the radius of earth, and it is equal to what? It is equal to 6.7 into 10 raised to power minus 11 into mass of earth 6.4 into 6 into 10 raised to power 24 into mass object is what? 1. Mass of object is what? 1 divided by radius का square of 6.4 into 10 raised to power 6 square, and it will come out to equal to 9.8 Newton. It will come out to equal to 9.8
8 Newton. Okay. Yesterday question number next. The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with the force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? Right on. The force of attraction by the earth on moon is equal. The force of attraction, या gravitational force of attraction by earth on moon is equal the gravitational force by moon on the earth. By moon on the earth. Okay, or gravitational force between two objects. Gravitational force between two objects. Bracket में लिखोगे anywhere in the universe. Bracket में लिखो anywhere in the universe. Oblique of any size. Of any size. Bracket close. Is always equal. Is always equal. ओके समझ गए? मतलब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, चार का पार्टिकल है और वहां पे क्या है, कोई अदर गैलेक्सी में कोई स्टार है, तो जितनी फोर्स इस डस्ट पार्टिकल ने उस स्टार के ऊपर लगाई है उतनी स्टार ने इसके ऊपर लगाई है, क्योंकि फॉर्मूला यही है ना, स्टार की डस्ट पार्टिकलों के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ये होगा g इनटू मास ऑफ स्टार इनटू मास ऑफ डस्ट पार्टिकल अपॉन r स्क्वायर। और स्टार का डस्ट पार्टिकल के ऊपर क्या होगा? फॉर्मूला ही होगा ना, तो फोर्स क्या होगी इससे? ओके हाँ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून? राइट ऑन। बिकॉज according to second law, force is equal to mass into acceleration. Okay, or acceleration is equal to force upon mass. Okay, so therefore acceleration produced in earth is equal to force between moon and earth divided by mass of earth. Okay, so therefore as mass of earth is greater or very large than moon, as mass of earth is very large than moon, therefore acceleration produced in earth towards moon is negligible, hence earth does not move towards the moon. Yes, next question. But इसी में लिखो what due to the gravitational force या due to gravity the moon revolves around the earth. The moon revolves around the earth because gravity provides the necessary centripetal force. Gravity provides the necessary centripetal force. Yesterday, next question on page number 144, sixth question.
What happens to the force between two objects if number one, the mass of one object is doubled? Yes, beta. So gravitational force between two bodies is given by G into m1 into m2 divided by r square. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हो रहा है, अगर मान लो बॉडी नंबर 1 का मास डबल कर दिया जाए या बॉडी नंबर 2 का ना, सेम चाहे बॉडी नंबर 1 या 2 का, लेकिन वन ऑब्जेक्ट का अगर मास क्या कर दिया जाए डबल, तो हमारे पास फोर्स कितनी हो जाएगी? m1 की जगह क्या आएगा? 2m1 है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, तो हमारे पास जो न्यू फोर्स आएगी दैट इज इक्वल टू 2 into g into m1 into what? m2 upon r square. तो फोर्स कितनी हो जाएगी? डबल। फोर्स कितनी हो जाएगी? तो फर्स्ट आंसर है डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। दिस, अगर अब डिस्टेंस जो है वो दो तरह का पूछा है ना, अगर डिस्टेंस जो है r डैश जो है नया डिस्टेंस जो है वो कर दिया जाए कितना? डबल 2r, या फिर डिस्टेंस जो है r डबल डैश कितना कर दिया जाए? 3r है ना, तो फोर्स को क्या होगा? बोलो शाबाश। तो देखो यहाँ पे बेटे फोर्स क्या हो जाएगी? बोलो शाबाश। ऊपर नहीं, ऊपर वाला तो आप भूल जाओ, तो फर्स्ट पार्ट था, बताया था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड है ना। ओके, अब पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए, डबल एंड ट्रिपल, और डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा 2r होल स्क्वायर है ना, 2r होल स्क्वायर की जगह बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा कितना? 4r स्क्वायर। तो फिर हमारे पास आएगा कितना? बोलो शाबाश, f डैश आ जाएगा हमारे पास कितना? सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास 4 into g into m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है? f है ना, f डैश इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास f अपॉन 4 है ना, तो फोर्स होगी वो 4 टाइम क्या हो जाएगी? डिग्रीज है ना। अब अगर बेटे कह रहा है फोर्स जो है वो कितना, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना आएगा? 3r स्क्वायर, 3r होल स्क्वायर, 3r स्क्वायर का हो जाएगा मतलब कितना? 3 का स्क्वायर 9 और r स्क्वायर आ जाएगा, तो एक कितना आ जाएगा? नेगेटिव फोर्स f डबल एस, f अपॉन 9 है ना। देन द फोर्स डिक्रीज्ड बाय हाउ मच अमाउंट? 1/9। ओके, यस। एंड थर्ड वन इज द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अब बेटे क्या पूछ रहा है? बोलो साहब, जो m1 है वो भी डबल कर दिया, m2 को भी डबल कर दिया, तो हमारे पास न्यू फोर्स आएगी f। ओके, डैश कितनी आएगी? बोलो साहब, को आ जाएगी हमारे पास 2 into 2 4 into g into m1 into m2 upon r square। f डैश आएगी कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू 4r। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बेटे? 4f, sorry, 4f only. Yes, next is 4 times. What is the importance of universal law of gravitation? Beta, yes. What is the importance of universal law of gravitation? ये हमने आर्टिकल किया हुआ ना। Okay, हाँ. So Newton's law of gravitation has given us the understanding. Write down. Universal law of gravitation. Universal law of gravitation has given us the understanding as to how artificial satellites, the universal law of gravitation has given us the understanding as to how artificial satellites will keep on moving in their orbits. It also given us the understanding as to why the heavenly bodies. It also given us the understanding as to why the heavenly bodies do not have a random motion. As to why the heavenly bodies do not have a random motion. It also gives us the knowledge of tides
It also gives us the knowledge of tides in the oceans due to gravitational force of moon. Due to gravitational force of moon. Question number बेटे next 8. What is acceleration of free fall? अभी किया ना, अभी किया हमने just now. Next question number 9. What do we call the gravitational force between Earth and an object? इसको बोलते हैं बेटे force of gravity और simple gravity. Okay. The force of attraction between Earth and any other body is called force of gravity or simple gravity. Yes. Question number 10. Amit buys a few grams of gold at the poles as per the instructions of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? Yes, it is. So here is a elliptical in shape, and here is what? This is the radius at equator, and this is the radius at pole. And we know acceleration due to gravity is equal to capital G into mass of Earth divided by square of its radius. Okay, so therefore acceleration due to gravity at equator is equal to what? Capital G, capital M upon radius at meter square. And acceleration due to gravity at pole is equal to what? Capital G, capital M upon RB square. Okay, as बड़ा कौन सा है? OA और OB. OA, तो जो बड़ा है उसका जो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा छोटा होगा ना. ओके, एज RE इज ग्रेटर देन RB. और ये मैंने आपको बताया था कितने किलोमीटर का फर्क है, 21 किलोमीटर. ओके, इक्वेटर वाली जो रेडियस है वाली रेडियस ये 21 किलोमीटर बड़ी है किससे, पोल से. देयरफॉर acceleration due to gravity at pole is greater than acceleration due to gravity at equator. Okay, or weight of the body at pole is greater than the weight of the body at equator. तो अगर मान लो अमित ने 1 kg 1 न्यूटन का लिया है, वेट लिया है कहां पे, पोल पे गोल्ड, और उसको अपने फ्रेंड को जाके हैंड ओवर कर रहा कहां पे, इक्वेटर पे. तो इक्वेटर पे उसका वेट जो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना. So therefore Amit's friend will not satisfy. Okay, therefore Amit's friend will not satisfy with the weight of the gold because acceleration due to gravity at equator, because acceleration due to gravity at equator is less than that at poles. Hence, weight of a body is greater at poles than at mass. Weight of the body is greater at poles than at equator. Yes, today next question. Gravitational force on the why does a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? Yes, बेटा देखो, listen. एक पेपर की शीट है, ओके, इसकी पेपर शीट, और दूसरी जो शीट है उसको ऐसे ऐसे क्या कर दिया है, क्रम्बल कर दिया. ओके, तो अगर हम दोनों को इकट्ठा फेंकेंगे तो कौन सी पहले गिरेगी नीचे, क्रम्बल वन. ओके, क्योंकि इसका जो एयर का फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, और इसका फ्रिक्शन क्या होगा, एयर से ज्यादा होगा. पैराशूट देखा ना आपने, तो पैराशूट जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है ना,
इसलिए जब वो नीचे गिरता है पैराशूट पर तो एयर का फ्रिक्शन जो पैराशूट को ज्यादा होता है ना, इसलिए वो धीरे धीरे गिरता है। और अगर मान लो पैराशूट खुले ना तो गोली की तरह आएगा नीचे ना। राइट डाउन, बिकॉज द air resistance against the direction of fall, air resistance against the direction of fall is more in case of sheet of paper as compared to paper wall, as compared to what? Paper wall. Okay, therefore paper walls reach the earth very soon than the paper sheet. Yes, question number next. Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of a 10 kilogram object on the moon and on the earth? Yes, beta. Weight of the body on earth is equal to mass of the body into acceleration due to gravity on earth. So mass of the body is given how much? 10 and acceleration due to gravity कितना है? 9.8. So 9.8 into 10 is equal to what? 98 न्यूटन। तो अर्थ के ऊपर उस बॉडी का जो वेट होगा कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन। ओके, एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑन मून, वो तो सेम ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है मून के ऊपर? दैट इज इक्वल टू m into g upon 6. so it is equal to what? It is equal to 10 into what? 9.8 divided by 6. It is equal to 16.33 newton. It is equal to what? 16.33 newton. Okay, next beta, question number. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meters per second. Calculate number 1 the maximum height to which it rises, and number 2 the total time it takes to return to the surface of earth. Yes, write down given. What is given to you? U is equal to what? 49. Yes, U is equal to 49 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब कोई भी बॉडी ऊपर जाती है सबसे टॉप पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 ना। तो टॉप पे v इक्वल टू व्हाट? 0। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जब बॉडी ऊपर जा रही है तो नेगेटिव होगी ना। बॉडी ऊपर जा रही है तो बताया था कल आपको, तो आ जाएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और टाइम जो है वो हमसे पूछा गया है, और क्या दिया बेटे आपको? डिस्टेंस जो कवर किया इसने, ठीक है, वो भी हमसे पूछा गया। ओके, हाँ, यस, राइट डाउन डायग्राम बना लो बेटा पहले। दिस इज द बॉडी ऑन द अर्थ, here is point A and here is point B, here is point A and here is point B. Okay, so you can write down from A to B, from A to B. Yes, write down. We know V is equal to U plus AD, और AD की जगह हम लिखेंगे क्या? GD. So therefore V is equal to 0, U is equal to what? 49, G की वैल्यू -9.8 into T, into what? T. So therefore -9.8 T is equal to -49, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और T is equal to what?
49/9.8 and it is equal to what? 5 seconds. It is equal to what? 5 seconds. Okay? Okay? तो एक बॉडी होगी वो कितना लेगी ऊपर को टाइम बोलो सावास 5 सेकंड. कितना टाइम लेगी 5 सेकंड. तो कोई बॉडी जितना ऊपर को जाने में टाइम लेती है उतना ही नीचे आने में ना. ओके तो ऊपर जाने का जो टाइम लिया वो कितना है T1 कितना है 5 सेकंड और ये ऊपर जाने का. ओके और नीचे आने का जो टाइम था T2 वो भी कितना है 5 सेकंड. तो टोटल टाइम नीचे आने को कितना लग गया 10 सेकंड. देयरफॉर a body when thrown upward takes equal times for upward and downward motions. Hence, total time taken to return to the surface of Earth is total time taken to return to the surface of Earth is what? 10 seconds. Next question, beta. A stone is released from the top of a tower of height 19. Distance पूछा ही नहीं है. नहीं पूछ. Maximum height. So S to find out. H. You know H is equal to EP plus half GT square. Okay. H is equal to what? Height पूछा maximum distance है ना. तो कितना आ जाएगा बेटा बोलो शाबाश. आप इससे निकाल सकते हो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2g है. h से निकाल सकते हो ना. therefore h इक्वल टू व्हाट 4 बोलो बेटा 49 into t की वैल्यू कितनी ऊपर जाने को 5 minus 1/2 into what 9.8 into 5 square. Okay so therefore 49 into 5 is equal to 245. तो क्या लिया आगे